ಸರ್ವಸ್ತುತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ಮೀಸಲು. ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ವಿಷಯ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಹಕ್ಕುಗಳು. ಇಂದು ನಾವು ನೆರೆಹೊರೆ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನೋಡಿದಾಗ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂದು ನೆರೆಯವರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ ಕೂಡಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು, ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹೆಸರೇನು, ಅವರ ತೊಂದರೆಗಳೇನು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಗುರಿ ಏನೆಂದರೆ, ನಾವು ಮೊದಲಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬಾಳುವ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ತನ್ನ ನೆರೆಯವರ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅವನ ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲವೋ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಉಂಡು ನನ್ನ ನೆರೆಯವ ಉಪವಾಸ ಮಲಗಿದರೆ ಅವನು ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅವರ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಈ ನೆರೆಯವರ ಜೊತೆ ನಾವು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ, ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಓಣಿ ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಕಲ್ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸುವುದು, ನೆರೆಯವರ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ರ್ಯಾಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇತರ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಎಲ್ಲ ಕೆಡುಕುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ನೆರೆಯವರ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಾಳೋಣ ಎಂದು ಈ ಸಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವಾಖಿರು ದಾವಾನಾ ಅನಿಲ್ ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वक्त जमात इस्लामी पूरे मुल्क के अंदर हुकूक़ हमसाया के सिलसिले में एक मुहिम चला रही है। इस्लाम पड़ोसियों के हुकूक़ के सिलसिले में बहुत ज़ोर देता है। हमारे पड़ोसी मुसलमान हो या हमारे गैर मुस्लिम भाई हों, सब के साथ बेहतर से बेहतर ताल्लुक़ात करने की तालीम देता है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत एक हैरत अंगीज़ जो है बात जो है फरमाई, वो शख्स मुसलमान नहीं है, वो शख्स मुसलमान नहीं है, वो शख्स मुसलमान नहीं है जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी महफूज न हो। यानी इस पड़ोसियों का कितना ख्याल करना चाहिए, इसकी एक और हदीस के अंदर ये बात भी आती है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जिब्राइल मुझे इतनी ताकीद कर रहे थे पड़ोसियों के हुकूक के सिलसिले में, मुझे अंदेशा हुआ कि विरासत के अंदर भी इनको शामिल न कर दिया जाए। और फिर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से जो है फरमाते हैं, ए अबू ज़र, अगर तुम्हारे पास गोश्त पक रहा है तो उसमें पानी ज़्यादा मिलाकर अपने पड़ोसियों को जो है पहुँचाओ। एक मुसलमान का जो है अपने पड़ोसी कैसे भी रहें,
मगर जो है हमारे हिंदू भाई रहें, मुसलमान रहें, रिश्तेदार रहें या अजनबी रहें, ये सब के साथ जो है बेहतर जो है सलूक करने की जो है तालीम देता है। वो कहता है कि तो अगर मुसीबत में है पड़ोसी तो उसकी मुसीबत को दूर करना चाहिए, अगर उसकी मदद की ज़रूरत पड़े तो उसकी मदद करनी चाहिए, अगर भूखा है तो उसे खाना खिलाना चाहिए, और किसी जो है बच्चों की तालीम के सिलसिले में कुछ ज़रूरत पड़ती है तो उसकी भी मदद करना चाहिए। हमारे हाथ और जो है ज़ुबान के ज़रिए से किसी तरह की भी तकलीफ़ हमारे पड़ोसी को ना पहुँचे। हम पड़ोसियों के घरों के सामने पार्किंग भी ना करें, पड़ोसियों के घर के सामने अपना घर का कूड़ा कचरा भी जो है ना फेंकें, और फिर अगर कोई दूसरा हमारे सामने फेंक रहा है तो फिर हम उस पर भी सब्र करें, उसका भी अजर अल्लाह ताला हमको जो है देगा। ये मिसाल आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा जो है फेंकने वाली औरत कितनी शिद्दत के साथ आपसे नफरत करती थी। जब बीमार वो हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इयादत की और उसका दिल जो है बदल गया। तो ये वो तालीमात हैं जिसके सिलसिले में हमें बहुत तवज्जो देना चाहिए। तमाम मुसलमानों को भी किसी भी जमात से ताल्लुक़ क्यों न रखते हों, अपने पड़ोसियों के हुकूक़ की पूरी हिफाजत करने वाले बने। और हमारे दिल जो है हमें सिर्फ अपने घर के दरवाज़ों के अंदर ही नहीं बल्कि दरवाज़ों के बाहर भी जो हुकूक़ हो सकते हैं हमारे पड़ोसियों के, उसकी तरफ भी हमें भरपूर जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये ऐसी चीज़ है जिसके ताल्लुक़ से मोहब्बत पैदा होती है, नफ़रत ख़त्म होती है, भाईचारगी पैदा होती है, और इसके अंदर ईमान की ताज़गी भी जैसे जो है हासिल होती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारे तमाम जो है मिल्लत के अफराद भी, हमारे ख़ास करके तहरीक के अफराद भी पड़ोसियों के हुकूक़ के सिलसिले में बहुत भरपूर जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारा ये प्रोग्राम ये कल से जो है 21 तारीख से शुरू होगा, 30 नवंबर तक रहेगा। इसके अंदर हमारे जुमा के खुतबे हैं, मुलाकातें हैं, पुलिस स्टेशन हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और हमारे घर के अतराफ जो मुसलमान हैं उन सब की जो है मुलाकातें करना और उनको इस बात की जो है दावत देना, ये हमारा जो है फ़र्ज़ बनता है। इसकी हम भरपूर जो है कोशिश कर रहे हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इस मुहिम को कामयाबी